And I give the floor to the representative of Bahrain. Thank you, President. At the outset, I would like to thank the United Kingdom for heeding our call and for inviting to this session at this important moment. I also extend our appreciation to His Excellency the Secretary-General for his briefing and for the information regarding the recent events and the repercussions on regional and international peace and security. Mr. President, a champion of peace and coexistence, never expected to be targeted by wanton aggressions without any justification. On behalf of the government of the Kingdom of Bahrain, my country strongly condemns the missile attacks targeting vital facilities and residential areas inside the Kingdom of Bahrain on Saturday. They were launched by the Islamic Republic of Iran, which confirmed its responsibility for these cowardly attacks. These attacks are a violation of our sovereignty and territorial integrity and the safety of our people, and they represent an indirect and unjustified attack that violates flagrantly international law, the UN Charter. It is also a grave threat to international and regional peace and security. The Kingdom of Bahrain strongly condemns these acts of aggression, which represent an unprecedented escalation. We reaffirm that targeting our territories, our vital facilities and residential buildings is a hostile act that is rejected, and we will deal with it firmly. Mr. President, the Kingdom of Bahrain is today under attack that are part of the missile attacks targeting several sisterly states in the region in recent hours, including the United Arab Emirates, the State of Kuwait, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, besides targeting sites in Jordan and in the Syrian Arab Republic. These grave developments reflect an escalatory pattern targeting our collective security. Mr. President, the Kingdom of Bahrain reaffirms that these attacks represent a blatant violation of the prohibition to threat or use force against the territorial integrity of states as per paragraph 4 of Article 2 of the UN Charter. We hold the government of Iran fully responsible for these attacks, and the Kingdom rejects any justifications or explanations aiming at justifying these hostile activities or to violate international law. We reaffirm our steadfast commitment to the principles and purposes of the UN Charter, and we reserve our full and inherent right to answer in a commensurate manner with the scope of these attacks and to take all measures necessary to re-establish our security, safety, to protect our territories, our citizens and our residents, according to Article 151 of the UN Charter and pursuant to international law in coordination with our partners and allies. Mr. President, the Kingdom of Bahrain calls upon the Security Council to shoulder its responsibilities in confronting these grave violations and to adopting a firm position to end these hostilities, to condemn them and prevent their recurrence in a way that guarantees regional and international peace and security. Allow me now to deliver this statement on behalf of the GCC countries, the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the State of Kuwait, and my country, the Kingdom of Bahrain, as well as on behalf of the Kingdom of Jordan and the Syrian Arab Republic. At the outset, and on behalf of the GCC countries, Jordan and Syria
I would like to thank you, Mr. President, for convening this session, and I thank the Secretary-General for his briefing. And as stated in the letter addressed to the Presidency today, several missile attacks launched by Iran targeted the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the State of Kuwait, and my country, the Kingdom of Bahrain, as well as the Hashemite Kingdom of Jordan and the Syrian Arab Republic, in a blatant violation of the sovereignty of these states and territorial integrity, and in a violation of their safety and in violation of principles of international law and the UN Charter. This represents a rejected escalation that threatens the security and stability of the region. These Iranian wanton and irresponsible actions also caused the injury of several residents and nationals in these countries and killed one civilian at least. They also damaged several facilities and civilian infrastructure, besides disrupting air navigation in the region, and also threatens to disrupt maritime navigation through the Hormuz Straits. This is a violation of international law and will have very grave international repercussions. Our countries reaffirm that these violations constitute a violation of the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity of states as per paragraph 4 of Article 2 of the UN Charter. We hold the government of Iran fully responsible for these attacks, and we reject any justifications or explanations to justify this hostile behavior or to manipulate rules of international law. We reaffirm that Article 51 of the Charter does not justify in any way these cowardly attacks. GCC countries strongly condemn and denounce law. We reaffirm that Article 51 of the Charter does not justify in any way these cowardly attacks. GCC countries strongly condemn and denounce this Iranian wanton aggression, and we reaffirm that targeting civilians and civilian infrastructure is condemned and rejected by all international and human standards. We reiterate our full solidarity with the sisterly countries that were targeted, and we stress that the security of the sisterly countries are part and parcel of our security, and that targeting any of these states means or represent a threat to the security and stability of the whole region, and we warn against the repercussions of this refused escalation. Mr. President, these Iranian attacks are not compatible with the good neighborliness principles, and they cannot be accepted in any way. We strongly reject using the territories of the countries of the region as a scene to score points or to expand the conflict, following the efforts made by the GCC countries, Jordan, and the region as a whole in order to facilitate dialogue between Iran and the international community in order to settle differences in peaceful means and to avoid escalation in the region. While the GCC countries reaffirm that their steadfast commitment to the purposes and principles of the UN Charter, they reserve their full and inherent right to self-defense pursuant to Article 51 of the UN Charter, and reserve the right to retaliate against this brutal attack in a compensate manner and in line with international law. We reserve the right to take all necessary measures to restore security and stability and to protect our territories, our people and residents, and to guarantee our sovereignty, security, stability and national interests. Mr. President, in conclusion, the GCC countries appreciate all the positions supporting our sovereignty and security. We call upon the Security Council to shoulder all its responsibilities in confronting these grave Iranian violations and to take a firm stance condemning and refusing these unjustified and irresponsible attacks and preventing their recurrence in a way that guarantees regional and
international stability and security. We call for containing this crisis to preserve the stability and security of the region, to protect its peoples, and to avoid a wider confrontation. Thank you, President. I thank the representative of Bahrain for the statement. I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Mr. President, we'd like to thank the Secretary-General for his briefing. First of all, I wish to express our firm rejection of item threats to international peace and security. That request was also contained in the relevant letter of the Iranian colleagues. The aggression that Iran has been subjected to today threatens to lead to escalation in an already escalated region, and it could go far beyond its borders. Particularly given the fact that one of the two initiators of this military venture is far from being a state in the region. Attempts by the British presidency to artificially downplay the degree of danger of the current situation is simply unacceptable. The presidency also grossly scorned Russia and China's request to invite as a briefer to today's meeting the professor at Columbia University, Jeffrey Sachs. The British colleagues do everything they can to assert the importance of inviting representatives of civil society to Security Council meetings. That clearly does not apply to cases when world-recognized academics are going to present truth that is unacceptable to the Western governments. In recent hours, we have witnessed a further extremely dangerous ratcheting up of escalation in the Middle East. Early in the morning of the 28th of February, the United States and Israel began launching massive military strikes on the territory of Iran. It was declared that one of the aims of the attacks one of the targets were the senior political leadership of the country and also civilian nuclear facilities. In real time, we are getting reports from the Iranian authorities about began launching massive military strikes on the territory of Iran. It was declared that one of the aims of the attacks one of the targets were the senior political leadership of the country and also civilian nuclear facilities. In real time, we are getting reports from the Iranian authorities about casualties, including among the civilian population. More than 200 people have died in 24 provinces of the country. We were particularly aggrieved to learn of the strike on a girls' school in Minab, where it is reported that 85 children were killed. We sincerely express our sincere condolences to the family and loved ones of the victims, and we wish a swift recovery to the injured. Our country will do everything necessary to ensure the security and safety of Russian citizens that are on the territory of the Islamic Republic of Iran. Mr. President, Washington and West Jerusalem's actions are nothing other than yet another unprovoked act of armed aggression against a sovereign and independent UN member state in violation of the Charter of the organization and of the fundamental principles of international law. They are openly aimed at further interfering in the internal affairs of Iran and at destroying a state that has found disfavor with the West. The US and Israel's irresponsible step, reckless step, as we warned previously, has already led to a sharp escalation of the situation across the region. Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, the United Arab Emirates, and Syria and Saudi Arabia have all been affected. And those countries that have repeatedly said to their American partners that they don't need this escalation in the Middle East. Moreover, the US and Israel military operation has been a betrayal of diplomacy. These countries once again are bringing to bear military force against Iran at the very height of negotiations, just as they did in June 2025.
Just the day before yesterday, on the 26th of February in Geneva, there was the latest round of US-Iranian contacts with the facilitation of Oman. The Minister of Foreign Affairs of Iran, Abbas Araghchi, noted that an understanding and agreement had been reached to continue the dialogue. For our part, we underscore that the Russian side has repeatedly received signals that the Israelis have no interest in a military confrontation with Iran. And then, despite Tehran's willingness to engage in the diplomatic process, it once again is stabbed in the back. Moreover, the fact that Washington for such a long time and methodically was building up its military presence in the region only confirms the fact that aggression against Iran was planned in advance. The actions of the United States and Israel risk triggering a humanitarian and economic catastrophe. Of particular concern, once again, are the threats to nuclear safety and security and radiological safety and security. The statements today from the President of the United States, Donald Trump. सायरन बजने में 2 मिनट और रास्ता अभी खुला नहीं, तो बस घूमे एक गली और पहुंच गए हम KFC। ट्रैफिक में इफ्तार करवाने वाली यारी KFC वाली। 3 zingers, 3 leg pieces, 3 drinks and a bucket of fries, only available at KFC. To put at the basis of new agreements with the United States the preservation of its status as a state, as a non-nuclear weapons state, provided that there is observation and respect for the legitimate right of the Islamic Republic of Iran as a state party to the NPT to develop peaceful nuclear technologies. Against this backdrop, the attempts of Western countries to justify the US and Israeli aggression as though there were some alleged threats to international peace and security are unfounded. These are threats that were allegedly coming from the Iranian nuclear program. We, of course, recall that the only source of reliable information in this regard are the relevant reports of the IAEA Director General, and those reports never indicated that. And they never said that Iran may be engaging in the development of a nuclear weapon. The objects that strikes are being launched against are under the agency's safeguards. That is to say, a priori, they cannot be used for any such activities. Against this backdrop, we expect that the IAEA Director General, Rafael Grossi, will provide unambiguous assessments and will condemn this latest undermining of the NPT's authority and undermining of the global regime for the non-proliferation by the USA and Israel. Nuclear energy objects, including the Bushehr nuclear power plant, cannot in any circumstances be the target of strikes by armed forces. That is unacceptable. Mr. President, we note that today's events were the latest phase of consistent escalatory steps around Iran by Western countries. That includes the US-Israeli strikes on the country's territory in June 2025 and the US's open interference and the open interference by US allies in the domestic political situation in Iran in January of this year. We also remember the failed attempts by the United Kingdom, France and Germany to trigger the mechanism to restore the effect of Security Council anti-Iran resolutions, the so-called snapback mechanism. However, that did not happen. Russia and a number of other UN member states repeatedly and in detail explained the reasons why the United Kingdom, France and Germany did not have the right to invoke that mechanism. However, that did not work, and the United States and Israel once again have brought military force to bear. There are obvious parallels with the events of 2003 when the US representatives waved a test tube around in this room to justify their invasion of Iraq by saying that there were weapons of mass destruction present there that no one actually found. In 2023, US Vice President J.D. Vance said that the Iraq campaign was unforced. As a result,
innocent Iraqis and Americans died, and that Washington had to learn that lesson. However, as it turns out, that lesson has not yet been learned. In the statements of the European colleagues, and we'll hear that again today, instead of condemning aggression and the deaths of Iranian civilians, we once again will hear the statement of the President of France, Emmanuel Macron, saying the Iranian regime must understand that it has no other option but to engage in good faith negotiations to end its nuclear and ballistic programs, as well as its regional destabilization activities, end quote. Similar assessments were voiced by the Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer. These absurd statements were then backed up by a joint statement of the leaders of the United Kingdom, France, and Germany, condemning only Iran's strikes on the countries in the region. Colleagues, just think for a moment. This sort of reaction is coming at a time when Iran has been subject to armed attack, to military attack at the peak of an active negotiating process. The hypocrisy of our European colleagues knows no borders. And these aren't even double standards. It's a parallel reality, the other side of the looking glass. In the English language, there's an ideal term to describe the situation: victim blaming. One gets the impression that London, Paris, and Berlin are living within illusions that they have created for themselves and are broadcasting to the world. However, attempts to mislead the international community are doomed to fail. Any common-sense person will fully well understand who is responsible, who bears responsibility for this latest uncontrolled escalation. Mr. President, we demand that the United States and Israel immediately cease their aggressive actions. An alternative to resolving the Iranian subject, including its nuclear component, the alternative to peaceful and diplomatic means simply does not exist, and it never has. We insist on the immediate resumption of political and diplomatic settlement efforts and the pursuit of solutions based on international law, mutual respect, and a balance of interests. Russia unchangingly stands ready to provide all necessary assistance for that work. Thank you. I thank the representative of the Russian Federation for the statement, and I give the floor to the representative of China. Thank you, President. I thank Secretary-General Guterres for his briefing and support his call for de-escalation and return to diplomatic negotiations. Today, the United States and Israel brazenly launched military strikes against targets inside Iran, causing a sudden escalation of regional tensions. China is deeply concerned about this development. China consistently advocates that all parties should abide by the purposes and principles of the UN Charter and opposes and condemns the use or threat of force in international relations. China stresses that the sovereignty, security, and territorial integrity of Iran and other regional countries must be respected. China is deeply saddened by the large number of civilian casualties caused by the conflict. At all times, the red line for protecting civilians in armed conflict must not be crossed, and the indiscriminate use of force is unacceptable. China calls on all parties to fulfill their obligations under international law, including international humanitarian law, effectively ensure the safety of civilians and avoid attacks on civilian facilities. The use of force is not the right way to settle international disputes. It only intensifies hatred and confrontation. The escalation and spillover of tensions in the Middle East serves no one's interests. Dialogue and negotiations are the only way to resolve differences. China calls on an immediate cessation of military actions to prevent further cycles of escalation. The military strikes occurred at a time when the US and Iran were engaged in diplomatic negotiations, which is shocking. The parties concerned should demonstrate political sincerity, resume dialogue and negotiations as soon as possible, and return to the right track of a political solution.
China stands ready to work with the international community to advance peace efforts and help restore peace and stability in the Middle East at an early date. I thank you, President. I thank the representative of China for the statement, and I give the floor to the representative of information shared, and we welcome the delegations participating at this meeting. Colombia is taking the floor guided by an essential conviction. The protection of human life must always be at the heart of international decisions, and we're also equally convinced that the United Nations Charter is binding. Colombia reaffirms its unequivocal defense of international law and of the purposes and principles of the Charter, international peace and security, the peaceful settlement of disputes, the prohibition of the use or the threat of the use of force, the sovereign equality of states, respect for the sovereign of the Charter, international peace and security, the peaceful settlement of disputes, the prohibition of the use or the threat of the use of force, the sovereign equality of states, respect for the sovereignty, territorial integrity and political independence of all states, and non-intervention. Mr. President, we are facing a serious military escalation that threatens to spill over into a regional confrontation with unpredictable consequences. The use of force and the logic of reprisals are substituting diplomacy, dialogue and law. In the face of this alarming situation, we condemn any military action that is contrary to the Charter, wherever it comes from. Our country has been consistent in this organization and in this council. No state may unilaterally claim the right to attack another in order to impose regime change. And that principle does not depend on who the actor is, as it is a pillar of the international order. The prohibition of the use or threat of force enshrined in the Charter does not admit selective interpretations. When that principle is violated, international security does not prevail. The law of the strongest takes over. When force replaces law, the international order is weakened and barbarism takes its place, and the first to lose are civilians. Colombia condemns the attacks and expresses solidarity with the peoples of Bahrain, Qatar, the UAE, Saudi Arabia, Jordan and Kuwait. Colombia expresses its deep concern over the human... All right, as you see there, we've been listening into the UN Security Council as they are now calling this emergency... ...be considered collateral damage. In this regard, we strongly condemn reported attacks against civilians and against civilian objects. This is in clear violation of international humanitarian law, particularly the principle of distinction, and we urge the immediate cessation of hostilities. Strict respect for international law and international humanitarian law is not optional. The protection of the civilian population is a legal and moral obligation. Mr. President, for these reasons, Colombia prioritizes dialogue and the peaceful settlement of disputes, not because we are naive, but on the basis of our experience, because we know that war does not resolve conflicts. On the contrary, it worsens them, it makes them more cruel, perpetuates them, and passes them on to future generations. Defending international law does not mean ignoring reality. Iran has international obligations that it must fully comply with, particularly in the nuclear... UN Secretary-General का इजलास जारी है, UN का इजलास जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई इस हमले में मारे गए हैं। अमेरिकी सदर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इसराइल के हमले में मारे गए हैं। और अमेरिकी सदर का अपने बयान में मजीद कहना है कि ईरानियों और
दीगर लोगों को इंसाफ मिल गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम तरीन बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई इसराइल के हमले में मारे गए हैं। अहम और बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमारे इंटेलिजेंस निज़ाम से बच नहीं सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं, वो हमारे इंटेलिजेंस के निज़ाम से नहीं बच सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये दावा किया है कि ख़ामनाई हलाक हो गए हैं। ट्रंप ने इस कार्रवाई को ईरान के अवाम और आलमी बरादरी के लिए इंसाफ करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरानी अवाम के पास ये मौका है कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए मुल्क का निज़ाम संभाल लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरानी अवाम के पास ये मौका है कि वो अपने हुकूक के लिए अपने मुल्क का निज़ाम संभाल लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सामने आया है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पासदाराने इनकलाब के अहलकार और फौजी भी मारे गए हैं जो उन्होंने बताया। उसकी मज़ीद डिटेल आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। IRGC और पुलिस फोर्स के भी लोगों को इस हमले में हलाक किया गया है। सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि ईरान के शहरियों के पास ये मौका है कि वो अपने हुकूक के लिए अपने मुल्क का निज़ाम संभाल लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने लिखा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर का बड़ा दावा, इस दावे से मुताल्लिक़ मुसलसल स्पेकुलेशन हो रही थी। अब अमरीकी सदर ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई इसराइली हमले में मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पासदाराने इनकलाब, फ़ौज और पुलिस फोर्सेस के लोग भी मारे गए हैं। अहम फैसले ईरान में जो लोग लेते थे वो भी इस हमले का निशाना बने हैं। साथ ही अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के शहरी अपने हुकूक के लिए ईरान के निज़ाम को संभाल लें। बड़ा दावा सामने आया है अमरीकी सदर का जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई इसराइल के हमले में मारे गए हैं और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पासदाराने इनकलाब और दीगर हुकूमती ओहदेदार जो कि ईरान के हुकूमत के अंदर नुमायाँ हैसियत रखते हैं वो भी इस हमले में निशाना बने हैं और उन्हें हलाक कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम और बड़ा दावा सामने आया जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के बयान में किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई हलाक हो गए हैं। ट्रंप ने इस कार्रवाई को ईरान की अवाम और आलमी बरादरी के लिए इंसाफ करार दिया है और कहा है कि ईरान की IRGC, फ़ौज और पुलिस फोर्सेस अब लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखती और वो अमरीकी हुक्काम से इम्यूनिटी चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के फ़ौजी और सिक्योरिटी इदारे मुहिब वतन शहरियों के साथ जम हो जाएं और मुल्क को दुरुस्त अज़मत तक वापस लाएं। ट्रंप ने यह भी मज़ीद कहा कि हमले जारी रखेंगे और ज़रूरत के मुताबिक हफ्ते या इससे भी ज़्यादा वक्त तक ये हमले जारी रह सकते हैं ताकि मशरिक़ वस्ता और दुनिया में अमन कायम किया जा सके। अमरीकी सदर का बड़ा बयान और इस बयान में उन्होंने क्लेम किया कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई हलाक हो चुके हैं। Arms proxy militias and to ensure the Iranian regime never, ever can threaten the world with a nuclear weapon. As President Trump said last night, for decades, the Iranian regime has willfully destabilized the world. It has killed American forces and citizens, threatened regional allies, and jeopardized the security of international shipping. Across the Middle East for far too long. This is not speculation. We know this to be true, and our men and women have paid for the actions of this regime and the IRGC with their lives. No responsible nation can ignore persistent aggression
and violence. The regime in Tehran has led attacks that have cost American lives. Hundreds of U.S. Marines in Lebanon, thousands of troops in Iraq. American hostage after hostage has suffered. Our ships fired upon dozens of times in the Red Sea. Iran has armed and financed militant organizations that undermine lawful governments and destabilize an already fragile region. Iran's continued pursuit of advanced missile capabilities, coupled with its refusal to abandon nuclear ambitions despite diplomatic opportunities, presents a grave and mounting danger. The international community has long affirmed a simple and necessary principle: Iran cannot have a nuclear weapon. That principle is not a matter of politics, it's a matter of global security. And to that end, the United States is taking lawful actions. This body, the United States Security Council, has acted repeatedly on this threat. 20 years ago, starting in 2006, Resolution 1696 demanded that Iran suspend all uranium enrichment-related and reprocessing activities, invoking Chapter 7 of the UN Charter, and adopting a legally binding resolution. When Iran failed to comply, this council followed with Resolution 1737, imposing mandatory sanctions, including bans on nuclear-related materials and technology, asset freezes on key individuals and entities linked to their nuclear program, and establishing a sanctions committee. Subsequent resolutions, 1747 in the year 2007, expanded arms embargoes and asset freezes. Resolution 1803 in 2008 tightened restrictions on dual-use goods and calling for the inspections of Iranian cargo. Resolution 1835 in 2008 reaffirmed the need for full compliance. And Resolution 1927 in 2010, which was the most comprehensive, banning ballistic missile activities, tightening the conventional arms embargo, targeting the IRGC and shipping lines, and prohibiting new Iranian banking relationships, built a robust multilateral framework to curb Iran's nuclear and missile pursuits. These measures, again adopted under Chapter 7, represented the world's collective judgment that Iran's actions posed a threat to international peace and security. And despite numerous opportunities for an alternative path, Iran remained defiant. And the Security Council decided on September 19th of last year, 2025, to restore these measures, snapback sanctions, sending a clear message that the world will not acquiesce to threats and half measures, and Tehran would be held to account. On top of these actions by the UN, American diplomacy was attempted repeatedly and in good faith. President Trump, Secretary Rubio, our special envoys, Witkoff and Kushner, were relentlessly dedicated to diplomacy. But diplomacy cannot succeed where there is no genuine willingness to cease aggression, where there is no genuine partner for peace. As President Trump said today, and he spoke directly to the Iranian people, he said, quote, "To the proud, great people of Iran, I saw tonight that the hour of your freedom is at hand. The entire world has witnessed the regime's wholesale slaughter of innocent civilians. The sad irony is that this same regime will attempt to lecture us today about human rights and the rule of law. Its presence here in this council makes a mockery of this body. But where the UN lacks moral clarity, the United States of America will maintain it. Indiscriminate and unprovoked attacks by the Iranian regime today against our regional partners, Kuwait, the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Jordan, and others, reinforce precisely why such actions are necessary. The regime has not only struck military assets, but civilian infrastructure as well. Those who stand with us
must know that their security is not negotiable. The safety of our allies is not conditional. It is assured. The bottom line is this, colleagues. Our allies and partners can count on the United States and can count on President Trump. Colleagues, peace is not preserved by appeasing those who threaten it. Peace is preserved through strength in the face of terror. History has taught us that the cost of inaction is far greater than the burden of decisive action. And our president, President Trump, has taken the representative of the United States for the statement, and I give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President, and thank you to the UK Presidency for convening the Council for this urgent meeting following the latest developments in the Middle East. I also wish to thank the Secretary-General for his statement. Today's developments are deeply concerning and pose the risk of further destabilizing an already volatile situation at a time of heightened tensions in the Middle East. Mr. President, let me reiterate our deep concern for the nuclear program, its ballistic missiles, its destabilizing activities in the region and beyond, and its violent crackdown and repression against its own people. As a consequence, the European Union, with Denmark's active support, has adopted strong sanctions against Iran, just like we have always been promoting diplomatic efforts to address the nuclear and ballistic missile programs through a negotiated solution. I also wish to express Denmark's condemnation of Iran's attacks today on countries of the region. This must stop immediately. We express our full solidarity with partners in the region under attack. Mr. President, at this critical juncture, de-escalation is imperative. A broader regional escalation would have devastating consequences for the Middle East and for international peace and security. We call for maximum restraint and respect for international law, including international humanitarian law. What is needed is for diplomatic efforts to reduce tension and for the negotiations to resume in good faith as the only viable, lasting solution to the Iranian nuclear issue. Iran must never be allowed to develop or acquire a nuclear weapon. This is essential for regional and international security. Finally, Mr. President, for years now, we have heard the Iranian president. For years now, we have heard the Iranian people calling for dignity, for opportunity, and for their fundamental rights to be respected. For too long, authorities in Tehran have failed to heed these calls. We call on Iran to refrain from further attacks, give up their weapons programs, and to meaningfully engage with the international community in a manner consistent with its international obligations and the will and aspirations of its own citizens. I thank you. I thank the representative of Denmark for the statement, and I give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, President. I would like to thank the Secretary-General for his sobering presentation and assessment of the unfolding situation in the Middle East after concerning developments in the region. We concur with his view that there is no viable alternative to a peaceful settlement. President, Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. Such a course of action will undermine the peace and stability of the entire region with far-reaching consequences. Pakistan also condemns the attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates, and stands in solidarity with all these brotherly countries and underscores the need to exercise maximum restraint. This is extremely unfortunate
since several brotherly Arab countries were in fact supporting dialogue and emphasizing the need to avoid escalation. We particularly laud Oman's role in facilitating and mediating dialogue between Iran and the United States. These unprovoked attacks, therefore, constitute blatant violations of the sovereignty of the brotherly Gulf states. Pakistan also condemns the unfortunate death of a Pakistani national in the UAE during this dastardly attack. We urge all sides to refrain from any further actions that may undermine the security and territorial integrity of other regional countries. President, we regret the fact that diplomacy has once again been derailed as these attacks have happened right in the middle of negotiations. These military actions undermine dialogue and further erode trust that was already in short supply. We offer our condolences and sympathies to civilians caught in the middle of these violent acts. Our thoughts go out to the school children in Iran and many civilians elsewhere, and the family of the Pakistani national who was killed during attacks on the United Arab Emirates earlier today. President, the purposes and principles of the UN Charter are inviolable and sacrosanct. The Charter prohibits territorial integrity or political independence of states. Pakistan reiterates the call for full respect for international law, including the UN Charter as well as the international humanitarian law. We are deeply alarmed at the risk of regional conflagration. Safety and well-being of millions of our compatriots in the countries of the region is also top priority for Pakistan. Pakistan is maintaining close contact and coordination with brotherly neighboring countries, including at the leadership level. We are ready to extend our support towards peaceful resolution of outstanding issues. Pakistan has consistently advocated the primacy of peaceful settlement of disputes and the imperative of avoiding confrontation and conflict in a region already beset by tensions and volatility, as the Secretary-General has also noted. Diplomacy and dialogue should be the guiding principles for achieving negotiated settlement of all contentious issues in accordance with the rights, obligations, and responsibilities of the parties concerned. Pakistan calls on all sides to immediately halt escalation and urgently resume diplomacy with a view to achieving a peaceful negotiated resolution to this crisis. Thank you so much. पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास से ख़िताब कर रहे थे और अपने ख़िताब में उन्होंने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कहा कि ईरान पर हमले अफसोसनाक हैं। आसिम इफ्तिखार इस अहम मौके पर ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सलामती कौंसिल में फ़ौजी कार्रवाइयों और बढ़ती हुई कशीदगी की शदीद मज़म्मत की जाती है। ख़ास तौर पर ईरान पर इसराइल और अमरीका की मुश्तरका अस्करी कार्रवाइयों को बिला जवाज़ उन्होंने करार दिया और आसिम इफ्तिखार का कहना था कि ये बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार ने खुद मुख्तारी और हक़ दिफा पर भी बात की। उन्होंने ज़ोर दिया कि ईरान को UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है और पाकिस्तान इस हक़ को तस्लीम भी करता है। आसिम इफ्तिखार ने मुकम्मल जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से फ़ौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया ताकि मज़ीद इंसानी नुकसान और ख़ित्ते में बहरान के फैलाव को रोका जा सके। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह बयान जारी किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को इसराइली हमले में हलाक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह इक़दाम सिर्फ ईरान के अवाम के लिए नहीं बल्कि तमाम अजीम अमरीकी शहरियों के लिए भी है। ट्रंप ने दावा किया कि खामनाई और दीगर हलाक शुदा रहनुमा अमरीकी इंटेलिजेंस और दीगर जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। सदर ट्रंप ने कहा कि उसे ईरान के अवाम के लिए एक बेहतरीन मौका उन्होंने करार दिया और कहा कि वो अपने मुल्क को दोबारा अपने कंट्रोल में लाएं।
और ताज़ा तरीन खबर यह है कि दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले में 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से बयान सामने आया है। दुबई मीडिया ऑफिस ने दुबई एयरपोर्ट पर हमले की तस्दीक की है। अमाराती वजारत दिफा ने मिसाइल हमले से मुताल्लिक़ नया अलर्ट भी जारी किया है और इस अलर्ट में कहा गया है कि रिहायशियों के मोबाइल फ़ोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है। रिहायशी फौरी तौर पर शेल्टर्स में चले जाएँ, खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर रहें। हमारे नुमाइंदे सिप्ते आरिफ ने ज्वाइन किया, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात हासिल करते हैं। सिप्ते आरिफ, दुबई मीडिया ऑफिस का एलामिया जारी हुआ है, बताया गया है कि दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी की जो टीम्स थी उन्होंने पहुंचकर जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल किया। बताया जा रहा है कि दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है जहाँ पर एक हिस्से पर ये हमला किया गया है और वहाँ पर जो नुकसान है वो आपको विजुअल में भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि ये हमला यहाँ पर किया गया और उसके बाद 4 अफराद जो जख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद दी गई है और उनको अस्पताल रवाना कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो टर्मिनल्स बिल्डिंग हैं, जो यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट की टर्मिनल्स हैं, उनको पहले ही खाली करा दिया जा चुका है यहाँ पर। और इस वक्त दुबई एयरपोर्ट के अहाते में या दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल्स पे जरूरी स्टाफ मौजूद है। पैसेंजर्स जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी या जिनको दूसरे ममालिक जाना था उनको होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया है। तो उस वक्त खुशनसीबी ये रही कि वहाँ पर लोगों की तादाद नहीं थी, मुसाफिरीन की तादाद नहीं थी। जरूरी हमला था जो जख्मी हुआ है और जिसको तिब्बी इमदाद यहाँ पर फराहम कर दी गई है। जी सिप्ते आरिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अलर्ट भी जारी किया गया है, उस मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी, ये अलर्ट यहाँ पर जो रिहायशी हैं दुबई और अबू धाबी में, वो वक्तन फवक्तन यहाँ पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन्स जो है वो दुबई मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होता है तो ये अलर्ट मुख्तलिफ रिहायशियों को यहाँ पर फ़ोन पर जारी कर दिया जाता है। उनको यही कहा जाता है कि वो घरों में या खुले मुकामात पर ऐसी जगह ना रहें कि अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंटरसेप्ट किया जाता है और कोई मलबा गिरता है तो उनको कोई नुकसान ना हो। तो अपने घर की खिड़कियों की तरफ ना रहें, अपने घर के अंदरूनी हिस्सों में रहें और खुले मुकामात पर जाने से गुरेज करें। तो ये अलर्ट बार बार यहाँ पर जारी किया जाता है और हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ। जब जलन हो सीने में, म्यूकेन लें पीने में। म्यूकेन बाय LCI। मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे और ताज़ा तरीन खबर यह है कि तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में 1 शख्स हलाक और 21 जख्मी बताए जा रहे हैं। तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद इमारतों में इस हमले के बाद आग भड़क उठी है, जबकि इसराइली हुक्काम का ये कहना है कि हमलों में 1 शख्स हलाक और 21 अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। इस मुतालिक अरब मीडिया का ये कहना है कि मुतअद्दिद इमारतों में इस हमले के बाद आग भड़क उठी है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमलों में अब तक 1 शख्स हलाक और 21 जख्मी हुए हैं। इस हमलों की तफसीलात के मुताबिक इसराइली हुक्काम ये बता रहे हैं कि हमले में 1 शख्स हलाक और 21 जख्मी हुए हैं। तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। अरब मीडिया ने बताया है कि मुतअद्दिद इमारतों में इस हमले के बाद आग भड़क उठी है। इसराइली हुक्काम का ये कहना है कि हमलों में 1 शख्स हलाक और 21 जख्मी हैं। और आपको ये बता रहे हैं कि इसराइल के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, उसमें 21 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 1 शख्स जाँ बहक होने की इसराइली हुक्काम ने तस्दीक की है। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। सरकारी खबर एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दामात की हिमायत। अमरीका का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का अज़्म। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई। कतर अमीर का कहना
कहना है कि अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया है। अमरीकी सदर के राब्तों का सिलसिला और उसकी खबरें आ रही हैं। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। सरकारी खबर एजेंसी का यह कहना है कि सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दामात की हिमायत भी सामने आई है। अमरीका का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई है। कतरी अमीर का इस मुतालिक कहना है कि अमरीकी सदर से उन्होंने कशीदगी पर कमी पर जोर दिया है। कतरी अमीर ने अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर दिया है। अमरीकी सदर ने रब्ता किया है मुख्तलिफ रहनुमाओं से, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने फ़ोन किया। सरकारी खबर एजेंसी से ये तफसील सामने आई और बताया गया कि सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की गई अमरीकी सदर की जानिब से। सऊदी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया गया। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दामात की हिमायत भी सामने आई। अमरीका का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का अज़म भी किया गया। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर भी सामने आया। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की हलाकत की भी अमरीकी सदर ने तस्दीक की और उन्होंने ये कहा कि अमरीकी और इस्राइली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया और कहा कि ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। ट्रंप ने कहा कि खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। सदर ट्रंप ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है। ईरान के अवाम के लिए उन्होंने कहा कि यह बड़ा मौका है कि वो अपने मुल्क को वापस हासिल कर लें और अपने हुकूक के लिए मुल्क के निज़ाम को संभालें। सदर ट्रंप ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए भी इंसाफ है। सदर ट्रंप ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर यह दावा सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इसराइल और अमरीका के मुश्तरका ऑपरेशन में मारे गए हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के अवाम के लिए यह बड़ा मौका है कि वो अपने मुल्क को वापस लें। खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए भी इंसाफ है। सदर ट्रंप ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद को फ़ोन भी सामने आया और दीगर GCC कंट्रीज़ के रहनुमाओं से उन्होंने राब्ते भी किए। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मारे जा चुके हैं। ईरान के अवाम के लिए अब ये बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। खामनाई की मौत न सिर्फ अवाम बल्कि दुनिया के लिए भी इंसाफ है। अमरीकी सदर ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रखी जाएगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जारी है। पाकिस्तानी मंदूब भी उसमें खिताब कर रहे थे और अपना सरकारी मौक़िफ़ दे रहे थे। साथ ही साथ अमरीकी सदर का बयान भी सामने आया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये इक़दाम सिर्फ ईरान के अवाम के लिए इंसाफ नहीं है बल्कि तमाम अजीम अमरीकी शहरियों के लिए भी ये इंसाफ है। ट्रंप ने दावा किया कि खामनाई और दीगर हलाक शुदा रहनुमा अमरीकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके और इसराइल के साथ ताउन के बावजूद उनके लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने ईरान के अवाम के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम किया है कि वो अपने मुल्क को अपने कंट्रोल में ले आएँ। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जबकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर है और अमरीका और इसराइल के दरमियान हालिया अस्करी कार्रवाइयों के बाद आलमी बरादरी सख्त मोहतात हुई है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास जारी था। आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार उससे खिताब कर रहे थे और सरकारी मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया।
इस वक्त भी जारी है, लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी मंदूब UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में फ़ौजी कार्रवाइयों और बढ़ती हुई कशीदगी की शदीद मज़म्मत की। ख़ास तौर पर ईरान पर इसराइली और अमरीका की मुश्तरका अस्करी कार्रवाइयों को उन्होंने बिलाजवाज़ करार दिया था। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि यह बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। साथ ही साथ अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान में कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और साथ ही साथ जो बड़ा दावा अपनी पोस्ट में उन्होंने किया वो ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को इसराइली हमले में हलाक कर दिया गया है। इसराइल के हमले में 30 बम उनके कंपाउंड पर गिराए गए थे और उस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर बंकर में मौजूद थे जब ये हमला किया गया। और इस हमले के नतीजे में ना सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, उनके दामाद और बहू भी हमले में जाँ बहक हुए हैं, जबकि सीनियर आला ओहदेदार जो कि ईरान की हुकूमत में अहम असर व रसूख रखते हैं और फ़ैसला साजी में अहम असर व रसूख रखते थे, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये इक़दाम सिर्फ ईरान के अवाम के लिए इंसाफ नहीं है बल्कि तमाम अजीम अमरीकी शहरियों के लिए भी इंसाफ है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ख़ामनाई और दीगर हलाक शुदा ईरानी रहनुमा अमरीकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके और उन्हें हलाक कर दिया गया है। उन्होंने इसे ईरान के अवाम के लिए बेहतरीन मौका करार दिया और कहा कि वो अपने मुल्क को दोबारा अपने कंट्रोल में ले आएँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी जारी है। साथ साथ उसमें मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अपना मौक़िफ़ पेश किया गया है और बताया गया है कि इस हमले के बाद दुनिया में जो मुसलसल तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसके क्या असरात हो सकते हैं। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो बयान लिखा, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने कहा कि साथ दावा उनका था कि ख़ामनाई अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस सिस्टम से बचने की कोशिश में नाकाम रहे हैं और इस हमले में ना सिर्फ वो मारे गए हैं बल्कि दीगर आला ओहदेदार भी मारे गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया और कहा कि ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि मुल्क को वापस हासिल करें। ख़ामनाई की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने इस पोस्ट में लिखा कि ख़ामनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ नहीं कर सकते थे। बड़ी बात अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी, जहां उन्होंने कहा कि ख़ामनाई की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने ख़ास तौर पर यह जिक्र किया कि ख़ामनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ नहीं कर सकते थे। अमरीकी सदर ने कहा कि ख़ामनाई अमरीका के इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ नहीं कर सकते थे। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। ईरान के अवाम के लिए उन्होंने इसको बड़ा मौका करार दिया और कहा कि वो अपने मुल्क को वापस हासिल करें। ख़ामनाई की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हुसूल तक अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी जारी है। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन उससे खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने भी उससे खिताब किया। ईरानी, अमरीकी और बरतानवी मंदूबीन ने भी इस इजलास में खिताब किया। इसराइली मंदूब इससे पहले, इजलास शुरू होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने ईरान पर अपने हमले का जवाब पेश करने की कोशिश की। उसके बाद मुख्तलिफ
मीडिया के ऊपर ईरानी मीडिया में भी क्लेम्स आते रहे, इस्राएली मीडिया, अमरीकी मीडिया और भारतीय मीडिया में भी क्लेम्स आते रहे। दोनों तरफ से क्लेम्स आने का सिलसिला शुरू हुआ और अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई मारे जा चुके हैं। ईरान के अवाम के लिए उन्होंने इसे बड़ा मौका करार दिया और कहा कि वो अपने मुल्क को हासिल कर लें। ख़ामनेई की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अमरीकी सदर ने यह कहा कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। सदर ट्रंप का ये कहना है कि अहदाफ के हुसूल तक बमबारी जारी रहेगी, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अमरीका की जानिब से मज़ीद भी हमले मुतवक्के हैं। साथ साथ इसराइल की जानिब से भी ये बावर कराया गया है कि ईरान पर मज़ीद भी हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान के हमले भी जारी हैं और अब से कुछ देर पहले होने वाले हमलों की अगर तफसील आपको बताएं तो तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। अरब मीडिया ने बताया कि मुतादिद इमारतों में इस हमले के बाद आग भड़की है और इसराइली हुक्काम ने बताया है कि इस हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक और 21 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी फ़ोन किया। सरकारी ख़बर एजेंसी ने यह बताया है कि सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है। मीडिया के मुताबिक अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार सामने आया। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दामात की हिमायत का ऐलान भी सामने आया। अमरीका का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म किया गया। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से गुफ्तगू भी हुई। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर देने का मुतालबा भी सामने आया है। कतर पर भी ईरान के मिसाइल हमले हुए हैं और कतर पर होने वाले हमले के नतीजे में वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। और ताहम इसके बावजूद कतर की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें de-escalation का मुतालबा किया जा रहा है। तल अबीब में भी ये बताया जा रहा है कि इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला और इस हमले के नतीजे में मुतादिद इमारतों में आग भड़की है। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमलों में एक शख्स हलाक और 21 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनेई समेत 10 से 15 अहम तरीन आला ईरानी रहनुमा इस कंपाउंड में मौजूद थे जो इसराइली हमले में मारे गए हैं। अमरीकी सदर ने यह कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई मारे जा चुके हैं। अब ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल कर लें। अमरीकी सदर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ से अब तक मुतादिद बार ईरानी अवाम को बराह रास्त मुखातिब किया गया है और उनको इनकरेज करने की कोशिश की गई है कि वो मुल्क का नज़्म व नस्क अपने कंट्रोल में हासिल कर लें। अभी अपने बयान में जो उन्होंने कहा है कि ईरान के अवाम के लिए ये बड़ा मौका फराहम किया गया है कि वो अपने मुल्क को हासिल कर लें। ख़ामनेई की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए भी इंसाफ उन्होंने करार दी। साथ ही साथ सदर ट्रंप ने कहा कि इंसाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ख़ामनेई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। ट्रंप ने कहा कि हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ नहीं कर सकते थे और उसके नतीजे में ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनेई अपने 10 से 15 साथियों के साथ मारे गए हैं इसराइली हमलों में। साथ ही साथ ईरान की अगर बात करें तो ईरान की जानिब से भी तरदीद का सिलसिला जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इन मालूमात को मनगढ़ंत करार दिया और कहा कि दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये बताया कि उनकी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ज़िंदा हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1 या 2 कमांडर ज़रूर हलाक हुए हैं लेकिन ज़्यादातर ईरानी रहनुमा और ओहदेदार खैरियत से हैं। साथ ही साथ ईरान की न्यूज़ एजेंसीज़ की जानिब से भी ये दावा सामने आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई बिल्कुल खैरियत से हैं और इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में हैं। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि क्लेम्स का सिलसिला जारी है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हलाकत से मुताल्लिक़ ज़्यादा बड़े क्लेम्स सामने आ रहे हैं जिसमें इसराइली मीडिया के 2 टीवी चैनल्स ने ये दावा किया कि
इस हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर की मैयत की तस्वीर सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दिखाई गई। साथ ही साथ भारतीय मीडिया ने ये क्लेम किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के साथ मरने वालों में दीगर जहां अहम शख्सियात थीं उनमें उनके दामाद और बहू भी मरने वालों में शामिल हैं। दूसरी जानिब अगर ईरानी ज़राए और उनके जो मीडिया है उस पर नज़र डालें, सरकारी न्यूज़ एजेंसीज़ पर नज़र डालें, तो वहाँ से ये दावा सामने आया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और दीगर अहम शख्सियात जिनमें सदर मसूद पेज़ेश्कियान और जो IRGC के अहम कमांडर्स हैं वो भी खैरियत से हैं। जिस वक्त ये हमला किया गया वहाँ से उन्हें मुंतकिल किया जा चुका था और इसीलिए वो इस हमले से महफूज रहे हैं। दुबई की साथ साथ आपको अपडेट दें, जहां पर दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले में 4 अफराद भी ज़ख्मी होने की इत्तला आई है। दुबई मीडिया ऑफिस ने दुबई एयरपोर्ट पर हमले की तस्दीक की है। इस मुतालिक अमराती वज़ारत दिफ़ा ने मिसाइल हमले से मुतालिक एक और नया अलर्ट जारी किया है और रिहायशियों को मोबाइल फ़ोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है। रिहायशी फौरी तौर पर शेल्टर में चले जाएँ, खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर रहें। ये भी कहा गया है UAE के हुकाम की जानिब से कि ईरान के ClickUp AI Note Taker is different than all the rest. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything, from action items to key decisions. And after every call, you get a clear summary. But where it really goes to the next level is that it's the only AI note taker that connects your meetings to the rest of your work. So stop stressing about taking notes and get the AI note taker that works for you. Get ClickUp AI Note Taker for your next meeting. साथ ही साथ अमराती वज़ारत दिफ़ा ने यह भी बताया है कि ईरान की जानिब से 132 मिसाइल तबाह किए गए हैं जो कि अमराती एयर स्पेस में आए और 195 ड्रोन्स को भी गिराया गया है। सलामती कौंसिल में आपको एक बार फिर बराह रास्त लिए चलते हैं। ईरानी मंदूब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। In the name of God, the compassionate and merciful, we appreciate the Secretary-General for his briefing and his contribution to this meeting. We express our sincere appreciation to the Russian Federation and China for supporting the convening of this emergency meeting of the Security Council to address the manifest aggression committed by the United States and Israeli regime. I also thank those Council members, in particular China, Pakistan and the Russian Federation, who have today taken principled position in condemnation this unlawful act. And it is regrettable that some members of this body, in a blatant double standard, disregarded the flagrant act of aggression committed by the US and Israel on Iran and condemn Iran for using its inherent right to self-defense under UN Charter. Mr. President, this morning the United States regime jointly and in coordination with the Israeli regime initiated an unprovoked and premeditated aggression against the Islamic Republic of Iran for the second time in the recent months, while deliberately attacking civilian populated areas in multiple large cities of Iran where millions of people reside. As a result of this brutal armed attack, hundreds of civilians have been killed and injured. The aggression and atrocious crime of the United States regime and the Israeli regime and the deliberate and persistent targeting of civilian infrastructure are going. In addition to the numerous civilian residential buildings, the aggressors have also targeted a school in the city of Minab, Hormozgan province, killing more than 100 children. The number of innocent civilians continues to rise. This is not only an act of aggression, it is a war crime and a crime against humanity. Yet today, once again, the representative of the United States, through a regrettable pattern, has attempted to distort facts and rely on misinformation to justify the blatant aggression of the United States and Israel against my country. The facts, however, are unequivocal. The
The justification advanced by the representative of the United States today are illegal and entirely devoid of legal foundation. The baseless allegation invoked to defend this unlawful use of force have no standing under international law. The invocation of preemptive attack claims of imminent threats or other substantiated political claims cannot legitimize aggression. Such claims are unfounded legally, morally, and politically, and they contradicted the clear principles of the Charter of the United Nations. I also categorically reject the assertion made by the representative of France, the United Kingdom, and certain other Western members regarding Iran's peaceful nuclear program. These claims lack a factual and legal basis. Mr. President, distinguished colleagues, the President of the United States and the Prime Minister of the Israeli regime have openly claimed responsibility for this act of aggression and have explicitly articulated regime change as their objective, an unmistakable admission of their intent to violate Iran's sovereignty and territorial integrity. The President of the United States has falsely described this aggression as necessary to neutralize an imminent threat to the American people. This is nothing more than a deliberate attempt to mislead the international community and the U.S. public opinion and manufacture consent for unlawful war. Similarly, the representative of the United States has cynically sought to mislead this Council, yet history provides ample documentation that the foreign policy of the United States has repeatedly relied on unlawful force, covert intervention, and political manipulation to alter the governments of other member states. This record is well established. The reality is clear and undeniable. What is taking place today against my country by the United States and the terrorist regime of Israel is a blatant act of aggression, a full-fledged violation of international law. No justification, no accusation, no narrative of disinformation can legitimize or excuse this manifest crime and aggression. Mr. President, we have communicated on several occasions with this Council and the Secretary-General about warmongering statements and interfering actions in the internal affairs of Iran by the President of the U.S. in a blatant violation of the UN Charter and international law, and called for the Council action. Regrettably, all were unanswered. The issue before the Council is straightforward: whether any member state may, including a permanent member of this Council, through the use of force, coercion, or aggression, determine the political future of another state or impose control over its affairs. International law and the Charter are explicit on this matter. Article 2, Paragraph 4 of the Charter categorically prohibits the threats of use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Mr. President, against this backdrop, I would like to make the following points. 1. What is occurring against my country is a clear act of aggression. It is an open armed aggression against the Islamic Republic of Iran. The United States and Israel war today is not merely a war against Iran. It is a war against the Charter of the United Nations, a war against international law, and a war against the international legal order upon which the United Nations and the Security Council have been built for over 8 decades. As the Charter affirms, the United Nations was established to save succeeding generations from a scourge of war. The Charter, adopted in 1945, is founded upon this fundamental principle. Members shall refrain from threat or use of force in international relations. The sole exception is the inherent right of self-defense under Article 51, and only in the event of an armed attack.
The military aggression carried out by the United States and Israel satisfies none of the criteria of lawful self-defense. Accordingly, the action of the United States and Israel constitute a manifest violation of Article 2, a peremptory norms and a fundamental principle of international law accepted by all member states. Neither the Charter nor international law recognize internal matters of states as justification for the use of force by other states. Were this otherwise, no international legal order could endure. The rule of law would be replaced by the rule of force. 2. In responding to aggression and large-scale war, the Islamic Republic of Iran is exercising its inherent and lawful right of self-defense under Article 51 of the Charter of the United Nations. The armed forces of the Islamic Republic of Iran are utilizing all the necessary defensive capabilities and means to confront this criminal aggression and deter the hostile acts. Consequently, all bases, facilities and assets of the hostile forces in the region shall be regarded as legitimate military objective within the framework of Iran's lawful exercise of self-defense. Iran will continue to exercise its right of self-defense decisively and without hesitation until the aggression ceases in full and unequivocal terms. 3. Iran remains firmly committed to respecting the sovereignty and territorial integrity of its neighboring countries. Under no circumstances will we target the sovereignty, people, or interests of our neighboring countries in the Persian Gulf. Our legitimate response have been directed solely and exclusively at the bases and assets of the hostile government of the United States that operate beyond the control of the host states. Priority has been given to the targets that diminish the aggressor capability and capacity to continue its malign actions. We had previously and formally conveyed this warning to the Secretary-General and the Security Council. 4. Despite continuous U.S. hostile policy, we were sincerely and seriously pursuing the path of diplomacy and dialogue to reach a just, fair, and sustainable agreement. Yet, for the second time in the midst of the negotiation, the United States betrayed diplomacy and resorted to force and launched an attack against my country in blatant violation of Charter of the United Nations, presently interfering in Iran's internal affairs. They are even calling on the people to riot against their own government. The recent record of the United States toward Iran is equally clear. Since January 2025, the U.S. administration again reinstated the hostile approach, including the policy of so-called maximum pressure and economic strangulation through sweeping sanctions. The General Assembly has repeatedly voted by overwhelming majorities against such unilateral coercive measures. The objective of these illegal measures has been transparent, unconditional surrender. Despite repeated warning by Iran to the Secretary-General and the Council regarding serious violation of the Charter by a permanent member, the Council has regrettably failed to discharge its primary responsibility, allowing the erosion of the rule of law in favor of the rule of force. 5. Just as the Israeli regime succeeded in dragging the United States into the quagmire of war with Iran, the United States in turn is deliberately seeking to expand the scope of the conflict by exploiting spaces in the Persian Gulf region. The hostile U.S. government dream of swallowing Iran and forcing the Islamic Republic of Iran into submission will never be realized. This war, before being a contest of military equipment and advanced technologies, is a battle of wills, and in that battle the Islamic Republic of Iran will prevail.
Furthermore, the Islamic Republic of Iran has repeatedly affirmed its commitment to diplomacy and negotiation. However, it will never submit to pressure, coercion, or force. Diplomacy has rules and principles. It cannot coexist with aggression. 6. The duty of Council members is to defend international law and specifically the Charter. They are not called upon to judge the political system of states, nor to determine whether military aggression or economic siege leads to freedom or domination. Expression of concerns and empty condemnation are not sufficient. The Council must act. Pursuant to Article 39 of the Charter, the Security Council must immediately determine the United States and Israeli regime have committed an act of aggression and demand the immediate cessation of its unlawful use of force, including any explicit or implicit threats against Iran, and require binding assurance of non-repetition. Affirm that the United States and Israeli regime bear full international responsibility for all materials and moral damage inflicted upon the infrastructure and facilities of the Islamic Republic of Iran and are obligated to provide full reparation. Let me conclude, Mr. President, with a simple and undeniable truth. Israel and the United States have attacked Iran. They have violated international law and the Charter of the United Nations. They must be held accountable. So long as this aggression continues, Iran will continue to exercise its inherent right of self-defense firmly, proportionately, and without hesitation until the aggression ends. The Security Council must act now and stop this act of aggression immediately. Silence is complicity in this crime. I thank you. I thank the representative of the Islamic Republic of Iran for the statement, and I give the floor to the representative. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरानी मंदूब खिताब कर रहे थे और अब आपको बताएं कि बुर्जुल अरब होटल के बैरूनी हिस्से में महदूद आग भड़क उठी है। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिप्ते आरिफ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सिप्ते आरिफ, क्या बताएंगे मज़ीद? जी, यहाँ आपसे कुछ देर पहले जब सायरन बजाए गए थे तो फजा में ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए थे और उनको नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की गई। अलबत्ता एक ड्रोन जो है वो बुर्जुल अरब, जो 7 स्टार होटल है दुबई का, जो समंदर में बनाया गया है, उसमें जाकर एक बैरूनी हिस्से पर ये ड्रोन टकराया, जिससे वहाँ पर आग भड़क उठी थी। अलबत्ता दुबई के हुकाम ने बड़ी बररफ्तारी से जो है ये आग जो है वो बुझाई है और हुकाम ने ये तस्दीक की है कि इमारत के सिर्फ बैरूनी हिस्से को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई जख्मी इस वाक़े में नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ वजारत दिफा की तरफ से ये बताया गया है कि इस वक्त तक, अभी तक सुबह से रात गए तक तकरीबन 350 मिसाइल और ड्रोन्स हमले यहाँ पर किए जा चुके हैं, जिनको हुकाम की तरफ से दिफाई निज़ाम की मदद से यहाँ पर रोका जा चुका है। अलबत्ता 11 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि मिसाइल के टुकड़े और ड्रोन्स के जो हैं वो यहाँ दुबई और अबू धाबी में गिरे हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो है वो माली नुकसान हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया सिप्ते आरिफ। देखा जा रहा है कि अमराती हुक्काम की जानिब से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया गया है और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है और ये बताया जा रहा है कि इस हमले के नतीजे में अब तक जो आग लगी थी उसको काबू में ले लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमराती हुक्काम का कहना है कि ईरान के 209 में से 195 ड्रोन्स को मार गिराया गया, 14 गिरने से महदूद नुकसान हुआ है। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है कि ड्रोन को तबाह करने के दौरान बुर्जुल अरब होटल के बैरूनी हिस्से में महदूद आग भड़क उठी थी। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमराती हुक्काम की जानिब से फौरी और भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया ताकि अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और इसी सिलसिले में ड्रोन जो हमला किया गया उसे फौरी तौर पर आग लगने पर महदूद आग भड़क उठी थी, उस पर काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक बार फिर रुख करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास पर, जहां इस्राएली मंदूब इस वक्त खिताब कर रहे हैं। Ending war. Let us be clear about what we are confronting.
This regime has built nuclear weapons in blatant disregard of international law and UN resolutions. It has brutally murdered its own citizens and crushed dissent. It's happened now as we speak in cities in Iran. It has expanded missile arsenals and armed proxies across the region. It has openly declared its intention to erase Israel from the map. Now, as it faces consequences, it is launching missiles and drones across the region, endangering the UAE, where a Pakistani citizen, unfortunately, was killed. Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Iraq. As we speak, in the last hour, a rocket targeted the city of Tel Aviv. Civilians, they don't target military bases. Civilians struck a building in Tel Aviv. An innocent woman was killed and 21 people were injured. This is a regime that destabilizes wherever it reaches. It spreads violence outward while crushing freedom at home. It is not reacting, it is expanding. It is a machinery of radicalism that does not recognize borders. Mr. President, diplomacy was exhausted. Iran was required to stop enriching uranium, stop heavy water projects, stop developing nuclear-capable missiles, and allow full inspections. Iran did none of it. Instead, it fortified its nuclear facilities so we cannot get to them, accelerated missile production, and continued to fund terror. Since the last operation in the summer, they spent billions on their proxies. The resolutions were clear. The strategy was just as clear. Delay, delay, delay. But we will not be played. And it's simple what they were planning. They were building the means to corner us, to force an irreversible reality with our backs against the wall. That is not a future Israel will accept. No responsible nation should. This operation is guided by clear objectives: eliminate immediate threats, dismantle the nuclear program, destroy its ballistic missile production, neutralize naval threats, break the proxy network that destabilizes the region. The operation was carried out in order to protect the people of Israel within the framework of the ongoing armed conflict between Israel and Iran, in line with the UN Charter and in accordance with international law. Our forces stand ready to stop extremism armed with nuclear weapons. To the soldiers of the IDF, our boys and girls, my son, my daughter, we salute you. You stand like lions defending our people. An entire nation stands behind you. We have heard the condemnation from few member states, from the Secretary-General. But we all know that escalation did not begin today. It began when Iran armed proxies and exported terror, expanded missiles and drones, advanced its nuclear program in violation of its commitments, turned on its own people, beating, imprisoning, executing. Where was the outrage of the UN? Where were the consequences? Now, Israel acts to prevent an irreversible threat, and the condemnation is immediate. This is the definition of hypocrisy. Some call this aggression. We call it necessity. We call it survival. Mr. President,
History has taught us never to ignore those who openly call for our destruction. When a regime says it will destroy Israel, when it chants death to Israel, when it promises to wipe Haifa and Tel Aviv off the map, we believe it. We genuinely believe it when we see those hundreds of ballistic missiles that they are launching to Israel. We believe the threats. We do not ignore them. We do not gamble with our survival. We act. Now let me address the brave people of Iran. You are not our enemies. This operation is not directed at you. It is directed at a regime that has silenced you, imprisoned you, and invested in missiles and uranium while your economy suffers. You deserve better. It is this regime, the Basij, the Revolutionary Guard, who have dragged your country into isolation. The world does not fear a free Iran. It fears a radical regime armed with nuclear weapons and driven by extremism. Your future should not be defined by those who chant for death. As President Trump has said, the Iranian people deserve dignity, security, and the chance to shape their own destiny. We are thinking about you. You are seen. You are not alone. The future of Iran belongs to its people. We stand with you. Mr. President, this week, Jewish families all around the world celebrate Purim. Many Israelis will do so now in a bomb shelter. The story of Purim happened more than 2,500 years ago, in the same place. In ancient Persia, an evil minister by the name of Haman sought to wipe out the Jewish people. And it began with words, with chants. It became a decree. It could have become a genocide. But Queen Esther refused to remain silent. She stepped forward, she spoke up, she acted before it was too late. That is the lesson we learned. It is not only an ancient lesson, it is a modern one. Last week, I stood at the gates of Auschwitz with dozens of UN ambassadors. We stood in a place that shows what happens when radicalism and extremism grows and no one stops it in time. Before the Holocaust, some leaders, serious leaders, believed that they could calm aggression with concessions. They were completely wrong. Giving in did not stop evil. It strengthened it. Winston Churchill understood what Queen Esther understood long before him. When destruction is declared and weapons are being prepared and assembled, leaders must act. Not later, now. Today, President Trump and Prime Minister Netanyahu understand that same lesson. For decades, the Iranian regime has built missiles, enriched uranium, armed proxies, and spread terror far beyond its borders. This regime is not only Israel's enemy. It is an enemy of stability, an enemy of every peace-loving nation. In this joint operation, Israel and the US are acting together, not because we see conflict, because we refuse to ignore declared destruction. We are stopping extremism before it becomes unstoppable. We will ensure that no radical regime armed with nuclear weapons and ballistic missiles can threaten our people or the entire world. Thank you, Mr. President.
I thank the representative of Israel for the statement. I will now give the floor to His Excellency Mr. Majid A. Abdulaziz, Permanent Observer of the League of Arab States to the United Nations. Thank you, Mr. President. I thank the Presidency for convening this emergency session today. I also extend my thanks to the Secretary-General for his powerful and comprehensive briefing. The Security Council convenes today at a pivotal moment in the history of the United Nations, a moment that unfortunately represents a glaring failure of the multilateral international system, a failure the League of Arab States has long warned against. Regrettably, it is a moment in which the Arab-Israeli conflict has expanded into a full-scale regional war, through which Israel seeks, through this escalation, to evade ending its occupation of Palestinian territories, to prevent the establishment of an independent Palestinian state, and to obstruct Palestine's admission to the UN in implementation of the two-state solution and the core principles of international legitimacy. Israel has done so by expanding the scope of its brutal military aggression against the Palestinian people in Gaza and the West Bank, by intensifying its efforts to annex the West Bank, and through repeated military attacks on Syria, Lebanon, Yemen, and Iran, all in a misguided attempt that is categorically rejected both regionally and internationally to impose Israel's hegemony on the Middle East by using military means. Even if it is at the expense of the member states of the League of Arab States and at the expense of the suffering of their peoples under Israeli policies and attacks aimed at imposing the law of force instead of the force of law. At the Council's previous meeting on this item last week, the Foreign Minister of Israel, the occupying power, made extremist religious assertions, thus offering clear evidence of the arrogance of Israel, which seeks to impose its own extremist religious interpretation on the word, claiming that all Palestinian land, including the West Bank, which cannot be annexed under President Trump's plan and under Security Council's Resolution 2803, all this Palestinian land has belonged to Israel for thousands of years. Such claims reflect an unmistakable contempt for the legal, historical, and foundational principles upon which international legitimacy have been built in this Council and in this organization. Despite the announcement 2 days ago in Geneva that negotiations between the United States and Iran on the Iranian nuclear file has made some progress, Israel has blatantly disregarded all these developments in pursuit of narrow, self-serving interests. It has launched a wanton military attack at dawn today against the Islamic Republic of Iran, claiming that the attack was intended to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. At the same time, Israel itself refuses to join the Nuclear Non-Proliferation Treaty. It refuses to subject its nuclear facilities to the IAEA's comprehensive safeguards regime, and it refuses at the same time to attend the United Nations Conference on the establishment of a Middle East zone free of nuclear weapons and other WMDs. That conference, held for the seventh consecutive year at the United Nations last November, with the active participation of the Islamic Republic of Iran in all its sessions, and with the continued boycott of Israel and one permanent member of this Council. This Israeli boycott of this important conference is clear. Although the conference seeks to achieve the same goal, which is to eliminate the ambiguous nuclear capabilities, both Israeli and Iranian, and this Israeli stand reflects the fact that Israel wants to remain the only state acquiring ambiguous nuclear capabilities in the Middle East and capable of producing nuclear weapons, which is something that Middle East countries cannot accept. Mr. President, despite all the above, the clear escalation
among all parties amounts to a cowardly and unjustified military assault by the Islamic Republic of Iran on several Arab states that are members of the League of Arab States. This escalation threatens to widen the scope of the military conflict and risks igniting a full-scale regional war. The General Secretariat of the League of Arab States have issued an official statement from which I quote: "The General Secretariat of the League of Arab States strongly condemns the Iranian attacks on the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, the United Arab Emirates, and the Hashemite Kingdom of Jordan." And I add the Kingdom of Saudi Arabia, Syria, and Lebanon. These missile attacks constitute a blatant violation of the sovereignty of states that advocate for peace and have worked to advance stability and did not participate in the war. The General Secretariat expresses full solidarity with these Arab states in confronting these attacks and affirms its support for any measures they take to defend themselves and to protect their populations. The Secretariat stresses that Arab states have taken clear positions regarding the Iranian crisis by rejecting military action against Tehran. Several Arab states exerted tremendous efforts to further mediation and to prevent the escalation we are witnessing today. The General Secretariat is deeply concerned by the grave dangers posed by the current situation in the region. It calls upon all influential parties in the international community to act immediately to de-escalate as quickly as possible, to prevent the expansion of regional instability and violence, and return immediately to dialogue. End of quote. In conclusion, Mr. President, the League of Arab States joins the Secretary-General of the United Nations in urging all states to respect their obligations under international law, including the UN Charter, which clearly prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, and prohibits any use of force inconsistent with the purposes and principles of the United Nations, especially when it involves attacking nuclear facilities, which could have catastrophic consequences for entire populations. The League also joins the United Nations in calling for an immediate cessation of hostilities and de-escalation to prevent a wider regional conflict that would have dire repercussions for regional stability in the Middle East. From this standpoint, the League of Arab States urges the Security Council, particularly with the United States assuming the Council's presidency beginning tomorrow, to lead the collective security regime to immediately halt military operations and to return to negotiations on all tracks, inspired by the positive momentum generated by last week's Board of Peace meeting and by the role of President Trump in advancing global peace, and in full respect for the established mechanisms of the multilateral international system, far from any geopolitical confrontations that will only prevent us from achieving global peace. Thank you, President. I thank His Excellency Mr. Abdulaziz for the statement. The representative of the United States has asked for the floor to make a further statement. Yeah, thank you, Mr. President. I wish to exercise my right of reply to the so-called representative of the Iranian regime. The United States strongly rejects this ridiculous and frankly farcical assertion that U.S. actions are inconsistent with international law. For 47 years, the Iranian regime has chanted, quote, "Death to America," at every turn, at every opening of its parliament. It has sought to eradicate the state of Israel. It has waged an unending campaign of bloodshed and mass murder. It is responsible for a series of unprovoked armed attacks targeting the United States and Israel, violations of the UN Charter, and threats to international peace and security across the Middle East. It has even attempted to assassinate the U.S. President Trump. It has done so
not only directly, but through its proxies, seeking to hide and mask its bad actions while publicly claiming to be a victim. Iran's menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, our partners, our allies around the world. The United States has made every effort to negotiate a peaceful resolution of this conflict with Iran. But Iran has failed to take that opportunity. So in close coordination with the government of Israel, the United States has taken lawful actions to address these threats in line with Article 51 of the Charter of the United Nations. And Mr. President, I'll just say on a final note, you know who is not complaining tonight? You know who is not citing the vagaries of international law? You know who is celebrating in the streets around the world? The Iranian people. Mr. President, maybe, perhaps just maybe, they will finally be free. I thank you. I thank the representative of the United States for the statement. The representative of Bahrain has also asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. I apologize for taking the floor once again. I would like to reread a paragraph from the statement of the GCC countries, Jordan and Syria. Accurately, it is as follows, and I quote, "As we have pointed out in the letter addressed to you today, a number of Iranian missile attacks have targeted today the UAE, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, the State of Kuwait, and my country, the Kingdom of Bahrain, and the Hashemite Kingdom of Jordan, and the Syrian Arab Republic, in a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of these countries." I think. I thank the representative of Bahrain for the statement. The representative of Iran has asked for the floor to make a further statement. Thank you. I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represent. Thank you. The representative of the United States has asked for the floor to make a further statement. Frankly, I'm not going to dignify this with another response, especially as this representative sits here in this body representing a regime that has killed tens of thousands of its own people and imprisoned many more simply for wanting freedom from your tyranny. Thank you, Mr. President. Okay. There are no more names inscribed on the list of speakers. Before adjourning the meeting, as this is really the last meeting of our presidency in the month of February, I would just like to express my thanks on behalf of the delegation of the United Kingdom to members of the Council, the Secretary-General and members of the Secretariat for all their support this month. The meeting is adjourned. ईरान पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास अब ख़त्म हो गया है। मुख्तलिफ मंदूबीन ने इस मौके पर ख़िताब किया और अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया और इन मौक़िफ़ को हमने आपको बराह रास्त सुनाया। इससे पहले दुबई मीडिया ऑफिस से मुताल्लिक़ ये अपडेट आई कि दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले में 4 अफराद ज़ख्मी हुए। एयरपोर्ट हमले की तस्दीक भी की गई। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने मिसाइल हमले से मुताल्लिक़ नया अलर्ट जारी किया और कहा कि रिहायशियों के मोबाइल फ़ोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है। बताया गया कि ईरान के 132 मिसाइलों को तबाह और 195 ड्रोन्स को गिराया गया है। बुर्ज अल अरब होटल के बैरूनी हिस्से में महदूद आग भड़क उठी थी। आग पर काबू भी पाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सामने आया, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर का ये दावा था। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका उन्होंने करार दिया और कहा कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर का दावा ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें।
खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ट्रंप ने लिखा कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। खामनाई हमारी इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। ट्रंप ने कहा कि हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ नहीं कर सकते थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है। इस मुतालिक अमरीकी मीडिया, इसराइली मीडिया, भारतीय मीडिया और बैरूनी ममालिक के मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी। ताहम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की हलाकत से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ने भी बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के दावे को ईरानी खबर एजेंसी ने झूठा करार दिया है। तेहरान से ये खबर सामने आई है। ट्रंप पहले भी मशहद के सुकूत की झूठी खबर दे चुके हैं। ईरानी खबर एजेंसी में यह दावा किया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप का दावा झूठा है। अबूधाबी एयरपोर्ट ने तस्दीक की है कि अबूधाबी के ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में एक एशियाई शहरी जाँ बहक हो गया है जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े के फ़ौरी बाद हंगामी टीम्स को तलब किया गया और ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। मुताल्लिक़ा इदारों के साथ मिलकर सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। सिप्त आरिफ ने ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद डिटेल हासिल करते हैं। सिप्त आरिफ, अबूधाबी एयरपोर्ट से भी रिलेटेड अपडेट आई है, क्या बताएंगे? जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर अबूधाबी एयरपोर्ट पर भी ये हमले की इतला जो चंद घंटे पहले आई थी उसके बारे में हुकाम ने तस्दीक की है कि वहाँ एक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में एक एशियाई शहरी जो है वो जाँ बहक हो गया जबकि 7 अफराद उस हमले में जख्मी हुए थे जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और जब ये वाक़या पेश आया है तो यहाँ पर हंगामी टीमें जो महकमा दिफा की टीम्स हैं इमाराती वो मौके पर पहुंची हैं और उन्होंने जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी है और जो मुख्तलिफ महकमे हैं उन्होंने जो है सूरत हाल को वहाँ पर कंट्रोल किया है। और इसके अलावा यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट और अबूधाबी एयरपोर्ट पर मौजूद जो मुख्तलिफ फ्लाइट्स हैं वो आपको पता है पहले ही मनसूख की जा चुकी हैं और जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं दोनों एयरपोर्ट के उनको मुख्तलिफ होटल्स में यहाँ पर ठहराया गया है, दुबई में भी अबूधाबी में भी, और उनको यही बताया जा रहा है कि जब सूरत हाल नॉर्मल होगी तो उनको मुख्तलिफ एयरपोर्ट से उनकी मंजिलों की तरफ रवाना किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सिप्त आरिफ। अबूधाबी एयरपोर्ट ने तस्दीक की है कि अबूधाबी के ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में एक एशियाई शहरी जाँ बहक हुआ जबकि 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए। इंतज़ामिया का ये कहना है कि वाक़े के फ़ौरी बाद हंगामी टीम्स को तलब किया गया और ज़ख्मियों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। मुताल्लिक़ा इदारों के साथ मिलकर सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। जबल अली की बर्थ पोर्ट पर भी ये बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से कि आग लगी है। जबल अली की बर्थ पोर्ट पर आग लगी है। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये भी अपने नाज़रीन के साथ जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे शेयर करेंगे। ताहम बताया जा रहा है कि जबल अली की बर्थ पोर्ट पर भी आग लगी है। सिप्त आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। सिप्त आरिफ, ये भी अपडेट आई है कि जबल अली की बर्थ पोर्ट पर आग लगी है, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मज़ीद क्या बताएंगे? जी, जबल अली फ्री जोन का जो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑफिस है जबल अली पोर्ट पर, वहाँ पर जो है वो हमले की इतला कुछ देर पहले आई थी। उसके बारे में भी हुकाम ने अब तस्दीक कर दी है कि वो अटैक हुआ है। अलबत्ता खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। अलबत्ता यहाँ पर भी आग भड़क उठी थी जिसको यहाँ पर जो शहरी दिफा की टीम्स हैं उन्होंने बुझाया है। और ये जो वाक़या है यहाँ पर जबल अली का जो पोर्ट है वो खास तौर पर आपको पता है कि यहाँ पूरी दुनिया को मिलाता है शिपिंग लाइंस के थ्रू, और इस पर हमले करने की जो है ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल मालूम होती है। इस वक्त यहाँ पर दुबई में जो मुख्तलिफ अहम तंशीबात हैं, अहम मुकामात हैं, उनको निशाना बनाया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर, अबूधाबी एयरपोर्ट पर, जबल अली पोर्ट पर, और इसके अलावा जो दुबई के अहम मुकामात हैं, सियाहती मुकामात हैं, खासतौर पर बुर्ज अरब और लेकिन देखा गया है कि इंतजामिया का रिस्पांस बहुत अच्छा नजर आ रहा है और बहुत जल्द ही सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की जाती है और सूरत हाल पर काबू पा लिया जाता है।
जी, हुकाम से यहाँ पर जब हमारी उमराती हुकाम से बात हुई थी तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही यहाँ पर शहरियों को, रिहायशियों को ये यकीन दिलाया था कि उन्होंने दिफाई निज़ाम जो है यहाँ पर एक्टिव कर दिया है, जिससे कोई बड़ा हमला अगर खुदा न खास्ता होता भी है तो उसको नाकाम बना दिया जाएगा। फ़ज़ा में आने वाले मुतवातिर, आपको पता है कि यहाँ पर मुतवातिर जो है वो मिसाइल और ड्रोन आ रहे हैं जिनके मुसलसल आवाम को और रिहायशियों को खबरदार किया जा रहा है। अलबत्ता ज़्यादातर हमले जो हैं वो नाकाम बना दिए गए हैं और इमाराती जो वज़ारत दिफा है उसने ये कहा है कि 14 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें मुख्तलिफ मिसाइल के जो टुकड़े हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं और इसके अलावा ड्रोन्स जो हैं वो चंद आम मुकामात पर गिरे हैं, जिसकी वजह से वाक़यात पेश आए हैं। लेकिन यहाँ पर शहरी दिफा का जो महकमा है उसने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वो मुसलसल एक्टिव हैं यहाँ पर और फाल नजर आ रहे हैं और वो आग बुझा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और जख्मियों को अगर जख्मी होता है तो उनको अस्पताल और तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी मुश्किल अबुधाबी एयरपोर्ट पर तस्दीक की गई है कि जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में एक एशियाई शहरी जहाँ बहक हुआ है जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हैं। ताहम इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स बहुत तेज़ रहा है। अब तक जो भी डिटेल सामने आई हैं उसमें दुबई एयरपोर्ट और दीगर एयरपोर्ट्स में, ख़ास तौर पर अबुधाबी एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक एशियाई शहरी के जहाँ बहक होने की इत्तला है। 7 अफराद ज़ख्मी हैं। और अपडेट करें आपको, ईरान इसराइल अमरीका जंग के बायस पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 परवाज़ों को मनसूख किया गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर मजमूई तौर पर 22 बैन अल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 18 बैन अल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख हुई हैं। आज भी मशरक़ वस्ता के लिए परवाज़ों को मनसूख किया जा रहा है। ईरान इसराइल अमरीका जंग के बायस पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। ज़राए का ये बताना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर मजमूई तौर पर 22 बैन अल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 18 बैन अल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख हुई। आज भी मशरक़ वस्ता के लिए परवाज़ों को मनसूख किया गया है। और इससे पहले आपको बता रहे थे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे से मुताल्लिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के मारे जाने का दावा किया गया अमरीकी सदर की जानिब से। ईरान के अवाम के लिए उन्होंने इसको बड़ा मौका करार दिया और कहा कि वो मुल्क को वापस हासिल कर लें। ख़ामनेई की मौत ना सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रखने का भी उन्होंने ऐलान किया। अमरीकी सदर ने ये कहा कि ख़ामनेई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ भी नहीं कर सकते थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत से मुताल्लिक़ इसराइली मीडिया, अमरीकी मीडिया, भारतीय मीडिया और यूरोपियन मीडिया में भी खबरें चल रही हैं। ताहम अमरीकी सदर ने बाकायदा तौर पर इन दावों से मुताल्लिक़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा और उन्होंने ख़ुद भी दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई इसराइल के हमले में मारे जा चुके हैं और ये हमला ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो अपने मुल्क को वापस हासिल कर लें। अमरीकी सदर ने ख़ामनेई की मौत को न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए भी इंसाफ करार दिया और अमरीकी सदर का ये कहना था कि अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रखी जाएगी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ख़ामनेई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरी जानिब अगर हम ईरान के रिस्पॉन्स को देखें तो ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के दावे को ईरानी खबर एजेंसी में झूठा करार दिया गया है। तेहरान से ईरानी खबर एजेंसी में ये बयान सामने आया है कि ट्रंप पहले भी मशहद के सुकूत की झूठी खबरें दे चुके हैं और अब एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप झूठ फैला रहे हैं। सदर ट्रंप के दावे को ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत से मुताल्लिक़ जो उन्होंने दावा किया है उसे ईरानी खबर एजेंसी झूठा करार दे रही है और इसमें कहा गया है कि ट्रंप पहले भी मशहद के सुकूत से मुताल्लिक़ झूठी खबरें जारी कर चुके हैं। एक तरफ अमरीकी सदर का दावा है, दूसरी तरफ ईरानी न्यूज़ एजेंसीज़ और उनके मीडिया के दावे भी साथ साथ चल रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई
मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था जब यह हमला हुआ, और वो इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में भी हैं, कमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला भी जारी है यूएई में, और ख़ास तौर पर इसराइल की अगर बात करें तो यरूशलेम और तल अवीव में भी हमले किए गए हैं, और वहाँ होने वाले हमलों के नतीजे में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। बताया गया इसराइली मीडिया की जानिब से कि वहाँ पर नुकसान भी हुआ है, जिसमें एक शहरी जाँ बहक होने की इत्तला भी दी गई है। ताहम ये हमले ज़्यादातर काउंटर कर दिए गए हैं। मिसाइल और ड्रोन जो ईरान में गिरे हैं, ईरान की जानिब से फायर किए गए तल अवीव में गिरे हैं, उनमें ज़्यादातर हमलों को नाकाम बना दिया गया है। इसराइली हुक्काम ने यह बताया है कि हमलों में एक शख्स हलाक हुआ है जबकि 21 ज़ख्मी हुए हैं। तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ। अरब मीडिया ने इस मुतालिक बताया कि मुतादिद इमारतों में इस हमले के बाद आग भड़क उठी। यरूशलेम और तल अवीव में ईरान की जानिब से जो हमला किया गया उससे अब तक का जो नुकसान हुआ ताज़ा हमलों में, उसके मुताबिक अब तक एक शख्स हलाक और 21 ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम ईरान के जवाबी हमलों की बात करें तो ख़ित्ते के दीगर ममालिक में ईरान ने हमले किए हैं। अमाराती हुक्काम ने इस मुतालिक कहा है कि ईरान के 209 में से 195 ड्रोन्स को मार गिराया गया है और 14 के गिरने से महदूद नुकसान हुआ है। जो ये ख़बरें आ रही हैं दुबई एयरपोर्ट, अबू धाबी और दीगर इलाकों से कि वहाँ पर मिसाइल या ड्रोन्स के टुकड़े गिरे हैं, ये तकरीबन 14 ड्रोन्स हैं जिनके गिरने से महदूद पैमाने पर नुकसान हुआ है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौरी रद्द-ए-अमल और कार्रवाई की गई है। महकमा शहरी दिफा की जानिब से सूरत हाल को फ़ौरी तौर पर कंट्रोल किया गया है। दुबई के मीडिया ऑफिस का कहना है कि ड्रोन को तबाह करने के दौरान बुर्ज अल अरब होटल के बैरूनी हिस्से में महदूद आग भड़क उठी थी। आग पर काबू पाया गया है, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी तरह अबू धाबी एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में एक एशियाई शहरी जाँ बहक हुआ और 7 अफराद ज़ख्मी बताए गए। इस इंतज़ामिया ने बताया कि वाक़े के फ़ौरी बाद हंगामी टीम्स को तलब किया गया और ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतल्लिक़ इदारों के साथ मिलकर सूरत हाल पर काबू पाया गया है। और अबू धाबी से मुताल्लिक़ एक और ख़बर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लायंस के दरमियान दूसरा वनडे मनसूख कर दिया गया है। इंग्लैंड लायंस और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान दूसरा मैच आज अबू धाबी में खेला जाना था। इंग्लैंड विमेन टीम का यूएई में ट्रेनिंग कैंप भी मौखर कर दिया गया है। टीम्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार दी गई है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लायंस के दरमियान मैच अब नहीं होगा। इंग्लैंड टीम शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में सेमीफाइनल के लिए मुंबई जाएगी। ECB की जानिब से बाकायदा एलामी जारी किया गया है। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल और कशीदगी के बाद पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच मनसूख कर दिया गया है। इंग्लैंड लायंस और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान दूसरा मैच आज अबू धाबी में खेला जाना था। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। I would like to thank the Secretary-General for his sobering presentation and assessment of the unfolding situation in the Middle East after concerning developments in the region. We concur with his view that there is no viable alternative to a peaceful settlement. Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. Such a course of action will undermine the peace and stability of the entire region with far-reaching consequences. Pakistan also condemns the attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar,
and the United Arab Emirates, and stands in solidarity with all these brotherly countries and underscores the need to exercise maximum restraint. This is extremely unfortunate since several brotherly Arab countries were in fact supporting dialogue and emphasizing the need to avoid escalation. We particularly laud Oman's role in facilitating and mediating dialogue between Iran and the United States. These unprovoked attacks, therefore, constitute blatant violations of the sovereignty of the brotherly Gulf states. Pakistan also condemns the unfortunate death of a Pakistani national in the UAE during this dastardly attack. We urge all sides to refrain from any further actions that may undermine the security and territorial integrity of other regional countries. President, we regret the fact that diplomacy has once again been derailed as these attacks have happened right in the middle of negotiations. These military actions undermine dialogue and further erode trust that was already in short supply. We offer our condolences and sympathies to civilians caught in the middle of these violent acts. Our thoughts go out to the school children in Iran and many civilians elsewhere, and the family of the Pakistani national who was killed during attacks on the United Arab Emirates earlier today. President, the purposes and principles of the UN Charter are inviolable and sacrosanct. The Charter prohibits threat or use of force against territorial integrity or political independence of states. Pakistan reiterates the call for full respect for international law, including the UN Charter, as well as the international humanitarian law. We are deeply alarmed at the risk of regional conflagration. Safety and well-being of millions of our compatriots in the countries of the region is also top priority for Pakistan. Pakistan is maintaining close contact and coordination with brotherly neighboring countries, including at the leadership level. We are ready to extend our support towards peaceful resolution of outstanding issues. Pakistan has consistently advocated the primacy of peaceful settlement of disputes and the imperative of avoiding confrontation and conflict in a region already beset by tensions and volatility, as the Secretary-General has also noted. Diplomacy and dialogue should be the guiding principles for achieving negotiated settlement of all contentious issues in accordance with the rights, obligations, and responsibilities of the parties concerned. Pakistan calls on all sides to immediately halt escalation and urgently resume diplomacy with a view to achieving a peaceful, negotiated resolution to this crisis. पाकिस्तानी मंदूब की गुफ्तगू आपने सुनी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर का दावा, जिसमें उन्होंने कहा कि ख़ामनाई इसराइली हमले में हलाक हो चुके हैं। ईरान के अवाम के लिए ये बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। सदर ट्रंप ने कहा कि ख़ामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रखने का भी उन्होंने ऐलान किया। अमरीकी सदर का ये कहना था कि ख़ामनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ भी नहीं कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। इससे पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था, मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़बरें आ रही थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मारे जा चुके हैं और अब और आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि ईरान पर जब हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमारात भी उन ममालिक में शामिल था जिस पर हमला किया गया, लेकिन अमाराती हुक्काम की जानिब से इन हमलों को मौसर अंदाज में नाकाम बनाया गया। चंद मकामात पर कुछ नुकसान हुआ जुज़वी तौर पर, लेकिन फौरी तौर पर महकमा दिफा की जानिब से उसे भी
कंट्रोल कर लिया गया और नुकसानात को कम से कम किया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी यूएई के अंदर लाइट शो हुआ, वो आपको दिखाते हैं। सिप्ते आरिफ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सिप्ते आरिफ, हम देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान की जानिब से जो हमला किया गया अमारात के अंदर और खौफ व हिरास का माहौल फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ईरान में हम देख रहे हैं कि लाइट शो मुनक्किद किया गया है और अमन का पैगाम हम देख सकते हैं कि दिया जा रहा है। सिप्ते आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अमारात के एक स्टेट है जहां पर ये वाक़ है, दुबई, जिसमें देखा जा सकता है कि लाइट शो मुनक्किद किया गया है। क्या बताएंगे मज़ीद? जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर बुर्ज खलीफा की इमारत पर, जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है, वहाँ पर एक लाइट एंड लेज़र शो यहाँ पर दुबई में किया गया और मुतादिद अफराद, मुतादिद सयाह जो है वो चारों तरफ यहाँ पर जमा थे। आपको पता है ये रोज़ाना यहाँ पर जो है वो शोज़ होते हैं मुख्तलिफ दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के अतराफ। अलबत्ता लेज़र शो का ख़ास तौर पर आज एहतमाम किया गया था और दुनिया को ये पैगाम दिया गया है दुबई की तरफ से कि वो बेदार हैं, वो अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और वो किसी भी हमले को जो है वो बर्दाश्त करने के लिए, उससे निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और आवाम की तरफ से यही पैगाम दिया गया है यहाँ हुकाम की तरफ से कि वो मुतमईन रहें, यहाँ पर उनके इदारे, यहाँ पर दिफाई हुकाम जो हैं वो किसी भी हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। और गुज़िश्ता रोज से अब तक यही देखा गया है कि यहाँ पर तकरीबन 350 मिसाइल और ड्रोन्स के जो हैं वो हमले हुए हैं दुबई और अबूधाबी में। दुबई हुकाम की जानिब से एक पैगाम भी जारी किया गया है और हम देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। फुटेजेस में देखा जा सकता है। जो पैगाम जारी किया गया है उस मुतालिक अगर आप डिटेल्स बताएं। जी, यही यहाँ पर पैगाम जारी किया गया है कि शहरी मुकम्मल तौर पर मुतमईन रहें, उनके इदारे जो हैं उनको दिफा करने का जो है वो मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, वो अपने इदारों पर, वो अपने दिफाई महकमों पर मुकम्मल तौर पर एतबार करें। और यहाँ पर जो दुबई के हुक्मरान हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म हैं, वो भी एक तकरीब में जो है यहाँ पर महसूस होते हुए नजर आए कि जो दुबई का इलाका है, दुबई का इलाका है मैदान, वहाँ पर सालाना वर्ल्ड कप का जो है वो तकरीब जारी थी, वो उसमें शरीक हुए और यहाँ पर मेहमानों के साथ और जो मुख्तलिफ सयाह थे उनके साथ यहाँ पर उनकी रक्स करती हुई वीडियो भी जो है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो दुबई में हालात और पैगाम यहाँ पर हुकाम की तरफ से यही दिया जा रहा है कि आवाम और शहरी जो यहाँ पर बसते हैं वो इत्मीनान से रहें और जो हिदायत यहाँ पर आवाम को दी जा रही है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। बहुत शुक्रिया सिप्ते आरिफ, आप इस मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर आपको फिर भी अपडेट रखेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक। आयशा जैसे बहुत से दिल के मरीज बच्चे भी रोजा रखना चाहते हैं। आए अपनी ज़कात से इनका इलाज मुमकिन बनाएं। बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन। निसा हेयर रिमूवर क्रीम। आयशा जैसे बहुत से दिल के मरीज बच्चे भी रोजा रखना चाहते हैं। आए अपनी ज़कात से इनका इलाज मुमकिन बनाएं। इस तेजी से गुजरते वक्त में इंडस के लाखों मरीज और उनकी दुआएं आपकी ज़कात और एहतियात के मुंतज़िर हैं, क्योंकि रहे ख्याल कि वक्त की बात है। के सारंग पे म्यूजिक दबा, इस पार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाचती चला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। झलक ब्यूटी क्रीम, स्किन शाइन करे, ग्लो करे, अपनी झलक से सब ग्लो करो। विश फिक्स ग्लो। पूरे करम है छाया हुआ, फजल है हर जगह।
to life. लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। उम्रा ज़ायरीन और बैरून मुल्क सफर पे जाने वालों के लिए कराची पाकिस्तान की अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह असुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। ये गजा के साहली इलाके की मस्जिद खलीलुल वजीर है और आपको मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है जो कि शहीद कर दिया गया है। ये मशरकी गजा का इलाका है। यहाँ पर भी बहुत सी मसाजिद को इसराइल के तैयारों की बमबारी से शहीद किया गया। अहलन व सहलन फ़लस्तीन। ये बच्ची कह रही है अहलन व सहलन फी फ़लस्तीन, वेलकम टू फ़लस्तीन। मैं इराक के कैपिटल बगदाद में मौजूद हूँ। चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। तोरा बोरा से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। लिबनान के कैपिटल बैरूत से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कबे की मौत वाक़या हुई है। मैं मीर अली के करीब हूँ। पाकिस्तान से फलस्तीन और लबनान से अफगानिस्तान तक सच्चाई और अमन की तलाश का सफर जारी है और जारी रहेगा। जियो और जीने दो। देखिए कैपिटल टॉक पीर से जुमेरात शब 8:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। वक्त बदल रहा है और खबर देने का जाविया भी। हर मौजू हर पहलू पर तबसरा होगा एक नए अंदाज से। सबसे मोतबर और जानदार तबसरा निगारों के साथ हर मामले पर फौरी और हतमी राय। ये है सबसे मुनफरिद रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड पीर से हफ्ता शाम 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। गायब कहाँ थे आप? आज बड़े अरसे बाद हाथ आए। मैं इधर भी पैसा इस्तेमाल हुआ है। मैंने तो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वैलिडेशन हुई थी इसी सुप्रीम कोर्ट से। सिर्फ 2% वोट सही निकले हैं। 98% का कुछ पता नहीं किधर है। कुछ बातों का आप भी जवाब दें ना। मुल्ला उमर ने लिखा है कि मौलाना आपसे मैं अपील करता हूँ एक जिरगा हम बुलाएं। ये मुल्क की सलामती का मामला है। हिचो कि अफगानिस्तान खावरा पिछा फजीद ने शिकार हो। Economic corridor, one belt, one road. أشكر لكم أخي سليم. Did the American want this war? The policy didn't work. देखिए जिरगा हफ्ता और इतवार शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।
तमाम अहले वतन को जियो की जानिब से रमजान की खुशियाँ मुबारक। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। सबको मुयस्सर हो ये मकाम, सबको मुयस्सर हो ये मकाम। पहुँचे मदीने बनकर गुलाम, पहुँचे मदीने बनकर गुलाम। पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। हेलो बॉयज एंड राशिद भाई, हारना मना आ रहा है वर्ल्ड कप का। बताता चलूं कि इस बार हम बिल्कुल आराम से बातें करेंगे, आराम से बोलेंगे। और आप चुप होके तो कोई और बोलेगा ना ताबिश। इमामुल हक जब थे ना, वो ये शिकायतें नहीं करते थे। आमिर इसलिए ऐसा है क्योंकि ना हारना मना में यूएसए है और ना ही सुपर ओवर। ओए मैंने किसी को कुछ कहा है? हाँ तो हंसा तो था ना। जी आमिर भाई हंस रहे हैं आप हम पे। मुइन भाई बताइए इनको कौन हंस रहा है हम पे? ताबिश भाई मोइन खान नहीं हूँ मैं, राशिद लतीफ। सॉरी राशिद भाई, मुंह से निकल गया था, गलती हो गई, मिस्टेक। तो मुंह ना खोला करे ना अपना, सबको प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे बात तो ये है ना कि आप स्ट्राइक रेट की बात भी हो जाएगी। ठीक है भाई, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहस ना हो। T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है और इसमें बिल्कुल हार ना मना है। सफर है
कर दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने वाजे किया है